is this? Good. Assalamu alaikum everyone. Thank you, Umair, for coming over for a second on-demand session, I guess. Demand for you, but we're really happy that you demanded us to have this. This was Umair's idea. He's got a very interesting take on tweaking Postgres for the purposes. Is it on? Tweaking Postgres for optimization. I think we mentioned last time when he was here, he just started his company, Stromatics. He's mashallah been doing very successful over there. He's got several clients on just consultancy around Postgres and optimizations over there. So what he's sharing is probably from the trenches, and I think a lot of people are here to understand and know from you what and how do you optimize it for scale, for reliability in a production system. Please take it over. Thank you. Thank you, Affan. Assalamu alaikum, everyone. So I guess the importance of this audience right here is that Emumba is pretty much made up of all of developers. I'm going to get confused again, right? आप दोनों पहले जो है इकट्ठे बैठे हुए थे, अब दूर-दूर बैठे हुए हैं, and get confused again. Okay, so the idea behind this talk is कि आमतौर पे application stack के अंदर जो भी technologies use हो रही होती हैं, it's the application developers that decide what technology is to be used. DevOps or maintenance or DBAs के पास वो tech जाती है once it's already been incorporated in the application stack and it is ready for deployment into production. And application developers tend to gravitate towards technologies that are very easily adoptable, very quick to deploy, and that's actually one reason behind PostgreSQL's popularity. क्योंकि application developers को जो है वो बहुत पसंद है, आराम से जो है वो deploy हो जाता है. It's very easy to use. There's no complication in the setup, etc. But once it's deployed, once it's out there in production, is when the problems start to surface. जब आपकी application production में जाके it starts to scale, it gets more users, it gets more data, it gets more concurrency, it gets more connections, that's when you start to feel कि नहीं ये जो जिस तरीके से डिज़ाइन की गई थी application उस तरीके से perform नहीं कर रही. And I'm here to tell you a few very basic ideas about the things that you can watch out for, things that you can take a look at in order to make sure कि database आपका जो है वो application stack के साथ साथ scale कर रहा हो. So yeah, my name is Umair Shahid. I have been here before. I don't know कितने repeat हमारे जो हैं वो listeners हैं, लेकिन for those who are bearing to actually come again to hear me talk, thank you very much. And for everybody who wasn't here before, that thank you as well for showing up. Let's start talking about what this is going to be. So, very briefly speaking, what we're going to talk about is कि Postgres की popularity. ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा briefly हमने पिछली दफ़ा भी touch किया था, but the move behind the popularity of Postgres and the infrastructure that's typically used for the database. We will touch upon how things are different between when you kick off a brand new application stack versus when it's rolled out into production and has started to scale. And there are 4 areas that we are going to focus on: query and SQL optimization, performance features that are available in Postgres, architectural improvements that you can make in order to help the database perform better, and some parameter tuning. Now, a little bit about popularity. ये मैंने graph एक जो है वो post किया था in a blog post when Stack Overflow's 2023 survey results came out. So Stack Overflow, anybody over here who has never ever used Stack Overflow? अगर किसी ने हाथ खड़ा किया तो I'll know you'll be lying. तो ये हो नहीं सकता. So Stack Overflow is by far the biggest developer community in the world. आप अपनी development के अंदर you happen across a certain error, you copy and paste that error in Google. Most likely Stack Overflow is the first hit that you're going to get. और उस first hit का जो सबसे ऊपर answer आ रहा होगा, that's going to solve your problem. Just copy and paste the code over there and you're done. That's how 90% of the code is written. I'm just making up that number. So every year Stack Overflow runs a survey with the developers
और उसमें जो है वो amongst other things they ask questions about what technology developers love and hate and want to use and are using and want to learn, etc. So this is the popularity of the 5 most used databases over the course of 5 years. ठीक है, तो starting off भी जो है वो Postgres was not bad, it was at number 2, लेकिन MySQL की lead significant थी बाकी सारी databases से. Oracle for some reason has never been very popular with developers, right? Well, I won't say for some reason, it's really, really, really hard to use. You have to ramp up significantly in order to be able to use it. बिल्कुल जो basic जो उसके use cases हैं उसके अंदर भी you have to ramp up significantly, which is really, really hard to use. But over the course of the years, what we saw is कि MySQL की popularity जो है वो dip करना शुरू हुई है. Oracle पहले भी नीचे था, फिर भी नीचे रहा, Mongo आया, थोड़ा सा उसने जो है वो gain किया ground and then started to fall again. SQL Server is, you know, right, neither here nor there. But the prominent exchange in place took place between MySQL and Postgres. 5 years ago, MySQL had a significant lead over not only Postgres, but also all other databases. और मेरे ख्याल में बाकी databases से जो है वो MySQL की lead अभी भी है, but Postgres has overtaken it. Like it's gotten more and more popular, and 2023 is the first year that it became the most popular database with the developers. Now, hold that thought in your mind, the most popular database with the developers, and take a look at this chart right here. ये एक गार्टनर के एक स्लाइड डेक में से एक स्लाइड जो है वो मैंने उठाई है, and what it talks about it is 2022 के figures के लिहाज से they say that the database market is $91 billion worldwide. That's a big number. That's a lot of zeros after 91. 91 and then 9 zeros, $91 billion. And it grew by 14.4% over the course of 2022. ये थोड़े से पुराने फिगर्स हैं, अब तो 2023 भी एंड हो रहा है, 2023 एंड होगा तो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक गार्टनर का 2023 की जो है वो आउटलुक आ जाएगी. ये मेरे पास 2022 के फिगर्स हैं. But the most interesting thing in this entire slide that I find is right here. 98% of the growth that was experienced in the database market in 2022 was in the cloud. So essentially, ये जो 14.4% growth है और ये जो $11 billion gain हुए हैं database की industry के अंदर, 98% of that came from the cloud. और उस 98% का 80% जो है वो इन hyperscalers के पास है. Now imagine how rich they are getting. But why I say this is the question that you need to ask is the most popular database, the most popular platform. Postgres को cloud में upscale करना है. How do you do that? That's the question that we're talking about. Right? Now, when you're talking about the cloud, scaling your database or any infrastructure or any application tends to have a very simple answer, right? And that is, credit card इस्तेमाल करो, बड़ी machine डालो, you're scaling, खत्म बात. Right? That's the easy way to do it. But that's also how those hyperscalers are making a lot of money, because they will encourage you to increase the infrastructure because they charge more for it. Now, there's a downside to it, and that is, all you're doing by scaling your infrastructure is delaying the inevitable. अगर आपका पूरा application stack ही inefficient है, आप hardware जितना मर्जी उसके ऊपर फेंक दें, eventually it will eat up all of the resources and you're going to be back to square one. Right? So scaling by credit card has this fundamental flaw in it, and that is, all it does is it delays the inevitable. So, अब करना क्या है? Now, when you start off writing an application and you test it before deployment, essentially, that is how you're testing it. You know, you have a race car,
and you have this nice race track, and you test your race car for performance, and you test your race car for functionality, and it goes really well, you're satisfied, and you say, okay, now we're ready to deploy. लेकिन जब आप production में जाते हैं, तो this is what it looks like. Now, अब मुझे नहीं पता ब्लू एरिया का जो है वो ये वाली हालत किस किसने देखी हुई है असल में, लेकिन if you're stuck here, it doesn't matter how fast your car is. आप कह दें जी मेरी गाड़ी में V8 इंजन लगा हुआ है, टर्बो चार्जर लगा हुआ है, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, whatever it is, you're stuck in traffic. You're not moving. Right? So essentially, scaling by credit card is like having a turbocharged V8 powered, really nice, shiny sports car that's stuck in the middle of traffic going nowhere. What you need to have is a very holistic view कि अगर आपने गाड़ी तेज़ चलानी है तो ना सिर्फ गाड़ी आपकी जो है वो पावरफुल होनी चाहिए, आपके पास सड़कें भी उस तरह की होनी चाहिए, आपके पास ट्रैफिक भी उस तरह की होनी चाहिए, और you need to be able to actually push the car to the limits, ना कि उसे रश में फंसा दें and you don't really do anything. Now, in order to be able to do that, अगर by the way किसी को ये बटन मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं, because I'd loved it. I'd love to have it. There's no magic button that says, make everything okay. You press the button and everything is fine. सारा रश खत्म हो गया, अब आपके पास रेस ट्रैक खाली है, अब आप जितनी मर्जी स्पीड में गाड़ी भगाएं. That doesn't happen, right? And you have to go into a lot of detail about a lot of things. And what we're going to do is we're going to divide those lots of things into 4 categories, and we're going to briefly touch a few examples in these 4 categories. Okay? And those 4 categories are query optimization, performance features of the database, architectural improvements, and parameter tuning. Now, इसके अंदर एक चीज़ जो है ये मैंने यहाँ पे डाली हुई है, it says a developer's guide. वो मैंने लिखा इसलिए हुआ है क्योंकि the idea of this talk is to empower developers to be able to do at least the basics of Postgres tuning themselves. आपको basics पता हों कि ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, which is when you will be able to design applications that run efficiently and can leverage the database to its fullest. Right? Okay. By the way, please do feel free to interrupt me at any point that you have a question. I'd be happy to be interactive and answer as we go along. So the first point, query and SQL optimization. The first thing that I'd like to tell you about this is pgstat statements is your friend. Who all over here have ever used pgstat statements? Okay, so yeah, that's what I suspected. Now, pgstat statement hai kya? It's a view inside Postgres that logs statistics about the statements that are being executed against the database. Okay? Now, when you install Postgres, out of the box, by default, pgstat statements are turned off. The reason is that the statistics collector has its own little overhead. Roughly speaking, CPU load के ऊपर तकरीबन 2% का overhead जो है create करता है pgstat statements, right? And that's why it's turned off by default. But one of the first things that we tend to do each time we go into a client that's facing problems in scaling Postgres or with Postgres performance is that we say pgstat statements on hai, nahi hai, on karo ise. And then, we allow it to gather the data of the production system, and then over the course of a week or 2 weeks, it has gathered enough statistics जो फिर हम उसको analysis करना शुरू कर सकते हैं उसके. We were just talking about the client that is, pretty much right next door. अभी जो हम बात कर रहे थे, they had pgstat statements turned off. Right? We were working with them, and we turned it on. But now they have a campaign coming up in about a week that is going to last for a month. And we said कि अब जब ये turned on है, तो you run your campaign
And at the end of the campaign, when we have enough statistics, we're going to come in and we're going to analyze your system once more and then tell you what needs to be fixed. So PG stat statements is designed to track statistics about your SQL statements that you're running. Quick question about cloud में जो होते हैं, so RDS वगैरह जो होते हैं, उनमें you are allowed to enable this or not, or is it just RDS में this is enabled by default. And RDS में ये enabled होता है, and in fact RDS का जो आपका monitoring का console आपको देता है, वो PG stat statement से ही data gather करके उसको graphical form में आपको दे रहा होता है. Now there are a few stats that are very easy to understand and that are very easy to watch out for. In case you're running an application stack on Postgres and the database you feel is not performing really well, then one thing to watch out for is long running queries or PG stat. You have a question? So PG stat statements के अंदर, yeah, it's okay. As it is written in the first line, it's an extension and it's off by default. So if we are running a cluster, DB cluster, let's say there is a database we want to analyze. तो जब हम इसको let's say वहाँ पे by default ये extension available होती है हर जी. Okay, हर distribution के अंदर जो है this comes pre-packaged. You just need to enable it. enable specific to एक database होगी या पूरे cluster पे enable होगी? हर सर्वर के लिए जो है वो आपको enable करनी पड़ेगी. So cluster के अंदर अगर different nodes हैं, there are 3 nodes or 4 nodes, तो वो हर node के ऊपर enable करनी पड़ेगी. But once you enable it inside a node, और इसको enable करके आपको restart या reload करना पड़ेगा. yes, you do need to reload. Yes. It means कि अगर एक live database है, उसमें ये चीज़ आपको consider करनी पड़ेगी कि वो एक restart या reload करे. Reload means कि database stop नहीं होगा. The configuration is reloaded. तो database जो है वो आपके वो request को service करता रहेगा. So then how it works on the cloud? You don't know how many clusters are there and like that. So cloud के अंदर जो है there are 3 ways of using Postgres. एक तो ये है कि आप infrastructure cloud का उठाएं, Postgres खुद install करें. In that case you know exactly hardware क्या है, software क्या है और Postgres कहाँ पे चल रहा है. The second way is to use database as a service. ठीक है. Database as a service के अंदर वो by default on होता है. RDS हो गया, चाहे वो Azure for Postgres है, चाहे वो Cloud SQL for Postgres है, ये by default जो है वो on होता है. So you get those statistics. तीसरा आता है serverless, जिसमें Aurora, AlloyDB और I think Azure का जो है वो serverless नहीं है कोई. तो और उनके अंदर भी जो है वो PG stat statements आपको जो है वो enable करके देते हैं. ठीक है. So उसके केस में ये serverless के अंदर जो है वो cluster का concept ही नहीं होता, वो थोड़ा सा जो है वो different उसका concept है. But in case of RDS and in case of EC2 instances जिनके ऊपर आप खुद install कर रहे हैं Postgres, you have that control. Right? Okay. So I was talking about the first stat over here, which is mean exec time. View के अंदर ये एक column है. And if you select, do a select star from PG stat statements and you order by mean exec time descending, limit 1, you will get the single longest running query. ठीक है. जिसका mean execution time जो है वो ज़्यादा है, you'll get that query. ठीक है. और उस query को देख के जो है वो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसका execution time जो है वो ज़्यादा क्यों है. Then you've got the most frequent. Another column in this view is calls. What's the number of times this SQL statement has been called? If a statement is very, very frequent, you need to make sure that it is extremely efficient. ऊपर से लेके नीचे तक पूरे stack के अंदर जो है वो it needs to be absolutely efficient. जितने resources उसे आप दे सकते हैं उसे आप देंगे. ठीक है? You need to make sure that this query performs well. Then there is the standard deviation in execution time. उसका जो column name है, that's standard dev exec time. Standard deviation क्यों important है? Because if you see a query that has a high standard deviation, what is standard deviation? Can somebody fill in, any statistics person over here? जो हमारी overall stats होती है, ideal अगर हम graph को देखें, किसी
either is it better or is it worse in this case? बिल्कुल ऐसा है. So standard deviation tells you कि mean time से कितना deviate कर रहा है, values आपकी deviate कितनी कर रही हैं. So if standard deviation is high, that means that the query is sometimes performing really well and sometimes it's performing really bad, which is a red flag क्योंकि query की performance जो है वो consistent होनी चाहिए. If it is performing well at some instances and not that well in some instances, then there's something wrong and we need to investigate it. And then lastly, the queries that are IO intensive. तो इसमें जो है जो bulk read time और bulk write time है, these are again columns inside the PG stat statements view. Take a look at these and see कि किन queries का जो है वो read time और write time जो है वो ज़्यादा है, disk से ज़्यादा है. Disk important क्यों है? Because disk operations are expensive. Memory के operations जो हैं वो fast होते हैं, disk operations are expensive, and if there's lots of data being read from or being written to the disk, then there's, it needs some kind of optimization, right? So PG stat statements, turn it on, look at the statistics that are being gathered, take a look at the long running queries, the most frequently called queries, and other statistics that are available, and that will help you tune the queries that are running against the database, right? So that's one. You have another friend in Postgres, explain plans. Anybody over here knows what an explain plan is? Anybody over here who knows what a query planner is? Okay, not surprising. Again, मैंने पहले जो है disclaimer दिया था, this talk is oriented towards developers to empower you. आपको पता चले कि क्या-क्या चीज़ें आपके पास available हैं. So I'm not surprised कि you didn't know about this. Now, Postgres works on what is called a cost-based query planner. Query planner क्या होता है? When you run a query, it is not executed immediately. It goes to the query planner that creates a plan on how to run that query and then actually runs the query. और वो जो plan है, उसमें essentially the query planner evaluates all the possible ways it has to fetch the data for you that you need it to fetch. And then it picks up the most efficient way and then executes it. It's a beautiful piece of software within Postgres, the query planner. Extremely intelligent, very, very efficient. बाज़ औक़ात जो है, and I'll actually give you an example of this. बाज़ औक़ात आप उसे बता रहे होते हैं एक चीज़ के भाई इस तरीके से execute करो और वो कहता है कि नहीं मैंने किसी और तरीके से execute करना है क्योंकि that's faster. So and cost base क्या होता है? Cost base का यही मतलब है कि essentially when it evaluates all the different types of ways that you can use to execute the query, it assigns a cost for each of those ways and then picks up with the lowest cost. So question that comes in, why would a query have different time to execute? What are the variables which cause it to have different तरीके हैं? अगर एक हमेशा fast होता है, there should always be fast as the one that you choose. What changes that variable? What causes that variable? So उसके अंदर जो है वो the simplest of examples is whether the data should be fetched using a sequential scan or an index scan. Index अगर किया हुआ टेबल को और डेटा आपने fetch करना है, filtering भी जो है वो उस index के column के ऊपर हुई है. There can be times that using the index actually becomes more expensive than just doing a sequential scan. That's the kind of things that the query planner analyzes. ठीक है? Now, इसमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा यार यहाँ पे. That was the purpose. Okay. So, एक छोटा सवाल है, let's say you have indexed, let's say ID की base के ऊपर आपने users के example ले रखा है, किया हुआ है, और I got that one क्या होता है vertical index तो लेकिन मुझे ये बताया कि let's select style from users है, तो इसके against आप किस variables पे वो करेगा? Let's say हम लोगों ने simple users की list लेनी है fetching data, वो किस तरह लेगा? So essentially statistics जो है वो gather हो रही होती हैं background के अंदर query planner के लिए. The first thing the query planner is going to do is try to understand कि कितनी rows उसने fetch करनी है.
और उन रोज़ को फेच करने की कॉस्ट क्या होगी. Maybe there's only one way to do that, and that's what it analyzes and just executes it. So आप again cost का कह रहे हैं, but वो किस again उनका question में repeat कर रहा हूँ, वो किस parameters पे, वो क्या पहले अपने पास execute करके सबका time निकालता है, वो time की base पे? नहीं, this is on the basis of an estimate. क्योंकि जब आप डेटा डाल रहे होते हैं Postgres के अंदर, and as the database evolves with the data, आपने inserts किए हैं, deletes किए हैं, updates किए हैं, the statistics gatherer for the query planner keeps tabs on every table in the database. एक अंदाज़ा जो है वो उसे होता है कि रोज़ कितनी है for example एक table के अंदर, ठीक है, and it uses those values to create a plan. Let me okay, नहीं हाँ किसमें okay. याद है उसको जब when we were doing that, one of the thing was it takes into account not just the cost of running that query, but the cost of running all the other queries that are in its right. So what it does is basically आप अगर 10 queries एक साथ डालते हो, it's able to combine it and see, okay, with all of these 4 things, here is if what I run, I'll get everybody. So the cost of noise is done across a bunch of them, and then the overall throughput becomes very right. Sequential करना है. दो queries enemy और दो different sections में अगर उनको combine आप एक ही sequence scan करें तो दोनों का result जल्दी आता है. So it combines both of them. So planning में जो additional एक चीज होती थी उसमें वो आप buffer करते हो कुछ queries को थोड़ी देर. Right. I think that's a very good example. Or the advantage of this kind of planning becomes evident the more complicated a query becomes. सीधी जो queries होती हैं select star from users, उसके अंदर कोई इतना ख़ास जो है वो होता नहीं है. मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर जो है ना वो that's what I wanted to do. So ये PG bench जो है वो एक benchmark है जो आमतौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है to gauge performance of the Postgres database. तो ये मैंने एक जो है वो सिंपल सा जो है ना वो 100,000 रिकॉर्ड्स के साथ जो है वो उसका लोड किया हुआ है कुछ डेटा. तो इसमें अगर आप देखेंगे PG bench अकाउंट्स का जो है 13 MB साइज़ है एंड द नंबर ऑफ रोज़ is 100,000. ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ की 100,000 आ रही है. नाउ अगर मैं उससे कहता हूँ कि भाई एक्सप्लेन select star from PG bench accounts. So this is the plan that it shows. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूँ ताकि पीछे वालों को भी जो है वो नज़र आए. So what it does is it says कि it has run a sequential scan on the table. Its starting cost is 0. It ended the entire operation approximately with a cost of 2,640. The rows that it is likely going to return is 100,000. Each row has a width of 97 bytes. That's the explain plan over here. Okay. Now, if you see, मेरा table descriptor जो है वो ऊपर चला गया. If you see the table descriptor over here, you will see कि एक इसके अंदर index बना हुआ है with the primary key. It's a B tree index on the account ID. Now, if I filter by account ID, that sequential scan should now be an index scan, right? That's how the logic goes, right? So if I run a query that says select star from PG bench accounts where AID is, let's say, less than 5. Okay? So it's essentially going to return me 5 rows क्योंकि ये sequential है, यानी it's a sequence of numbers, AID जो आ रहा है, and it's going to return me these rows as it's simple. And if I say कि इसका जो है मुझे explain plan बताएं कि क्या है, it now says कि it now says that it has used an index scan using this particular index, which is the primary key index, on this table. Its starting cost was 0.29 and it ended at 8.36 and it fetched 4 rows.
each row had a width of 97 और condition क्या थी उसकी कि AID is less than 5. ठीक है, that's the plan over here. यूनिट इसका जो है वो ज़रा अनडिफाइंड है, इट्स बेसिकली रिलेटिव इन नेचर. ठीक है, it's a tricky thing to define. Essentially, it's not an absolute number, it's a relative number. So when you want to evaluate cost, what you do is you run different explain plans और उनकी cost को आपने आपस में evaluate करना है. तो ये cost जो है वो essentially calculate होती है with a combination of how the table is structured, what data is coming in, indexing क्या हुई हुई है, उसके ऊपर caching कितनी हुई हुई है, buffer में क्या कुछ पड़ा हुआ है, machine के जो है वो hardware कितना available है, resources कितने available हैं, ये सारे factors को जो है वो calculate करके उसके बाद एक cost calculate की जाती है. But it's relative in nature, depending on what hardware the server is running on and what resources are available and what data is being fetched. So essentially what it does, it creates a pipeline, or again, the query planner is smart enough to say कि अच्छा I'll start retrieving data और जैसे जैसे data मेरे पास available होता जाएगा I'll start sending it to you. Now it just so happens कि PSQL जो है वो तब data दिखाता है जब सारा आ चुका होता है, उससे पहले एक एक करके नहीं दिखा रहा होता. लेकिन in case it's a nested query, nested loops लगे हुए nested query है जहाँ पे डेटा को यूज़ किया जा सकता है साथ साथ. Essentially it says कि when I encounter that first piece of data, I'll start returning it to you, and this is when I'm going to end. So this is the starting point जहाँ पे पहला डेटा उसके पास available हो जाता है, and this is the last point जहाँ पे आखिरी piece of data जो है वो आता है. और ये सारा estimate है, right? These are estimates. ठीक है. Now you can also run explain analyze, which actually runs the query and also tells you the actual cost. But be very careful when doing that because it does actually run the query. So if you do an explain delete star from whatever the entire database, explain plan जब आपको बता देगा, लेकिन अगर आप explain analyze करके delete करेंगे तो now your data is gone. ठीक है, so be very careful when you do that. You had a question? Let's see. That's what you're saying? Right. But it's still an index scan, right? अब ये है, difference क्यों है? Now interestingly enough, the starting point is the same. The first piece of data, it still starts to get at the same time, with the same cost. लेकिन ending different है. Why? डेटा ज़्यादा है, एग्जैक्टली, यस. पहले जो है सिर्फ 4 रोज थी, अब कितनी रोज हैं? 9854. सो द एंडिंग टाइम इज नाउ. नाउ लेट्स डू. बढ़ता ही जाता है, यस. There is no absolute number, no. Absolute नहीं है, it's relative. So when you're benchmarking भी हमेशा relative होती है कि what is faster than the other or what is slower than the other. Absolute number benchmark का कभी भी इतना meaningful नहीं होता. अगर कोई आपको आके कह दे कि भाई मैंने जो है वो benchmark रन किया है और I achieved a TPS of X, that is going to hold little value to you unless somebody says कि मैंने benchmark रन किया, उसका TPS X निकला और फिर एक पैरामीटर ट्यून करके दोबारा बेंचमार्क रन किया और उसका जो है TPS Y निकला एंड Y वाज ग्रेटर देन X. नाउ यू नो कि वो पैरामीटर ट्यून करने की वजह से डेटाबेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है. सो जो एब्सोल्यूट नंबर है ऑलमोस्ट नेवर मेक्स इट. इन ऑर्डर टू मेक अ कॉल कि मैंने इसको इंप्रूव करना है, मेरे लिए कोई नंबर्स कुछ इस तरह की चीज़ है. इट्स नेवर अ कॉल, ऑलवेज इंप्रूव करना है, हमेशा करना है इंप्रूव. ठीक है. ये बैकग्राउंड वर्कर्स होते हैं इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे होते हैं. You cannot disable them, you cannot do anything with them. These are workers that are always running. pgstat statement जो है वो जो आपके लिए जो यूज़र के लिए स्टैट कलेक्टर है वो आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं.
लेकिन क्वेरी प्लानर का जो स्टैट्स कलेक्टर है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सॉरी इरफान, यू आर सेइंग. नहीं, वैसे भी कहते हैं this what you said, what Saman was asking, I think the right way to look at it is कि जो आपका DB है जिसके ऊपर आप वर्क करें उसके लिए सेम होता है. So if you change the database and that has no meaning. हाँ, तो इसीलिए relative जो है, हाँ, Current instance that you yes, relative होना. Now let's try doing the same thing with an explain analyze. I have a question. मेरे ख्याल में आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन स्टिल कंफ्यूजन है. अब ये जो क्यूरी एक्सप्लेन है, अब ये चूँकि एक्चुअली तो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ठीक है. अब इसको कैसे पता चला कि ये लेस देन 10,000 वाली कंडीशन जो है या लेस देन 5 वाली है, इसने एग्जैक्टली कितनी रोज रिटर्न करनी है? क्योंकि वो तो एक्चुअल डाटा तो उसने एक्सेस ही नहीं किया. देयर में भी 0 रोज. इसको कैसे पता है कि एग्जैक्ट कितनी रो रिटर्न करेगा? So let's say run experiment. ठीक है. Insert a lot of data in a table and let that data be in that table for a little while. उसके ऊपर आप queries जो है वो normal run करते रहें. Then delete that data and immediately after deleting run and explain on it. Delete करने के फ़ौरन बाद जो है वो पुराना अपना स्टैट उठाएगा और कहेगा कि अच्छा भी इसके अंदर इतनी रोज़ पड़ी हुई हैं और अभी उसके पास जो है स्टेटिस्टिक्स अपडेट नहीं हुई हुई. Essentially what happens is कि behind the scenes क्वेरी प्लानर के कुछ असिस्टेंट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं एज प्रोसेसेस, जो कि स्टैट्स जमा कर रहे होते हैं. व्हाट इज कॉल्ड द एनालाइज ऑपरेशंस. ठीक है. दे कीप एन एनालिटिक्स ऑफ एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द डेटाबेस and helps the query planner assign costs to every operation that it is supposed to perform. So basically आप समझें कि ये query planner के helpers हैं जो कि background में run कर रहे होते हैं, जो ये statistics जो हैं इनके पास ready होती हैं. Can we query the stats directly? नहीं, ये query planner का है. Okay, so if you run and explain analyze on this. एक तो ये कि you know that an American wrote this because it's an analyze with a Z, not an S. But now you see it's a slightly different version of what was shown earlier. Okay. Now it gives you an estimate, but it also gives you the actual time. It also gives you the planning time and the execution time. Now the query was actually run, and you find out कि यार तुमने तो अंदाज़ा लगाया था कि 449 का जो है वो कॉस्ट आएगी, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट तो उससे बहुत कम थी. अंदाज़ा लगाया था कि 9,854 रोज़ हैं, लेकिन एक्चुअल रोज़ जो हैं वो तो 9,999 है. बट अगेन दिस ओवर हेयर इज सिंपली एस्टिमेट्स दैट हेल्प्स द क्वेरी प्लानर डिसाइड what execution plan is the best to follow. This is not precise. These are estimates. Is it fair to say कि जो variation है 449 से 7.3 rupees between estimate and real, this is going to be the same delta error for any of them? Because what you're trying to do is you want to do the estimates and then compare them for your optimization. But if the estimates are so bad that एक case में वो percentage wise different दिखाते हैं, किसी और में error different होगा, तो फिर तो comparison So valid नहीं. ये वाले जो estimates होंगे ना, ये across the entire database जो है वो आपस में relatively जो है वो उनकी वो जो हाँ जो ratio होगा वो वही होगा, ratio वो होगा. ठीक है. So this is again ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि भाई इतना जो है वो आपका हो सकता है. Now why you need stuff like this is कि if you see there's a long running query, PG stat statements के अंदर जो है वो आपको पता चलता है कि एक long running query है and you're trying to investigate कि ये query इतना time क्यों लगा रही है, is when you run and explain on that query on the database where it is supposed to retrieve the data. You run and explain and you try and understand कि उसका query plan क्या है और उसके plan के अंदर किस step को जो है वो ज़्यादा उसके अंदर जो है वो cost आ रही है. And then you can then change the query to compare what. Exactly. Then you can tweak the query in order to make it perform better. ठीक है. ये tools जो हैं वो आपके पास available हैं in order to be able to tune the database for performance. And actually, I wouldn't even call it tuning the database because you're actually tuning the SQL, not the database. Database आपके पास पहले जो है वो काफ़ी तेज़ है. जी.
क्वेरी प्लानर को डिसेबल कर सके। Maybe there is a chance मतलब planning time ही ज़्यादा important है और उससे ज़्यादा time लगता Well, if you see over here, है। Yeah, for some queries maybe. नहीं, so the answer to your question is no, you cannot disable the query planner. ठीक है, वो तो एक एसेंशियल उसका जो है वो पहले पार्ट है ना, यानी कि क्वेरी प्लानर के पास पहले जाती है क्वेरी, उसके बाद ही एग्जीक्यूट होती है। यू कैन नॉट डिसेबल इट, दैट्स द वे इट्स डिजाइंड। Again, so आपने जैसे कहा था कि cost multiple query sets से होंगे। अब let's say अगर हम इसका कोई replicate query ले लें, जैसे for example AID is not greater than 10,000, cost भी same रहेगा ये? I don't know, let's find out. Right? So what you're saying is ये explain analyze चलाना है या explain चलाना है? Explain analyze चला दें। So you say AID is greater than 10,000, इस तरह से कर लें। नहीं, where AID is not greater than, क्योंकि data हम same लाना चाह रहे हैं ना, हम तो सिर्फ query को replicate कर रहे हैं, मतलब let's say for example where AID हाँ operation change कर रहे हैं उसका। Okay. जैसे देख रहे हैं कि आपने जिस तरह कुछ start में कहा था कि वो multiple queries के अंदर से देखता है कि किसका cost, तो मैं cost दे दूँगा वो फिर वो वाली run करेगा या ये वाली run करेगा? Okay, so you tell me how you're saying कि not greater than, not greater than का वैसे होता क्या है? Is that even an operator? I don't think it is. Not equal होता है, not great. Not greater जो है वो basically less than करता है। Not with a string. Not with a string. I don't know. ठीक है? So essentially what you're saying is कि आपने डेटा सेट जो है वो वही रिट्रीव करना है बट यूजिंग अ डिफरेंट क्वेरी, राइट? इस पर्टिकुलर के ऊपर क्या किया जा सकता है? लेस देन 10,000, what we can do is, एक मिनट, is greater than 90,000 अगर करें तो the actual data is different but the number of rows should be the same. ठीक है, क्योंकि total 100,000 rows हैं, तो less than 10,000 should retrieve 9,999 rows and greater than 90,000 should also retrieve 9,999 rows. But again वो जो width जो आपने start में बताई थी कि किसी की तो width क्या पता first 10,000 rows की width में data ज़्यादा हो। इस particular case के अंदर width सारों की एक है, सारी rows की width एक है। Should we do this? So the cost is roughly the same. Starting cost same है. Rows 10,000 इसने retrieve की हैं, the actual rows जो हैं, तो roughly the same. Actual का starting cost, yes, you're right, ये ज़्यादा है. Maybe because it does an index scan, goes to the end of the index and then starts the retrieval process. तो वो जो आ रहा है कितना फ़र्क आ रहा है? 1.2 का जो फ़र्क आ रहा है, that's the going through the index, जो actual index scan के अंदर पड़ रहा है. Does that help? You're not convinced. Your face tells me you're not convinced. क्या? What's the confusion? I think I don't understand your confusion. मतलब मुझे cost वाला ना अभी भी curious लग रहा है बहुत ज़्यादा। Curious इस वजह से लग रहा है कि मतलब आपने again cost का कोई हमें actual meaning नहीं बताया कि अब next time जब हम लोग database implement कर रहे हो, let's say for example आप cost का meaning बताते हैं कि indexing example ले रहा हूँ। अब हम next time अपनी indexing इतनी maintain रखें कि so that cost कम आए। तो cost behind ऐसा कौन सी चीज़ है कि हम लोग उसको implement करें so that cost कम आए? Okay, so आपने जो है वो cost को किस तरह से देखना है? You do an explain analyze. You are running a query that says कि give me all the get me all the data from PG Bench accounts. ठीक है? This is an extremely simple example just to demonstrate a point that I'm trying to make. Practically speaking, ये आपको लगेगा कि this is obvious, but when the queries are complicated, this is not that obvious. ठीक है? लेकिन सिर्फ इस point को demonstrate करने के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं, let's say your application is running a query that is retrieving all of this data from the database
it does a select star from PG bench accounts, ठीक है, it retrieves all of the data and then it says कि अच्छा मुझे जो है ना ये 10 records जो हैं वो चाहिए जिनको मैंने अपने जो है उसके ऊपर डिस्प्ले करना है, GUI के ऊपर डिस्प्ले करना है, ठीक है. Now the cost of running this query is well, the actual time अगर हम देख लें, it starts at 0.006 and it ends at 22.006. It retrieves 10,000 rows and it does a single loop. The execution time is 27.083 seconds. Now the thing is कि आपको तो चाहिए अभी 10 रिकॉर्ड ही थे, वो तो जब नेक्स्ट पेज के ऊपर GUI के अंदर क्लिक किया जाएगा तब आपको अगले 10 रिकॉर्ड चाहिए. आपको तो चाहिए टोटल 10 रिकॉर्ड थे लेकिन आपने 1 लाख जो है वो रिट्रीव कर लिया एंड दिस इज द कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग. नाउ लेट्स सी कि 10 रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव करने का में क्या कॉस्ट आती है. सो नाउ यू सी कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 22.006 से ड्रॉप होके आ गई 0.006 पे, ठीक है. एंड व्हाट इट डज, it tells you that when you're retrieving data, if you are focusing on the data set or only the data set that you absolutely need is when the query performs better. If you try and retrieve data that is more than what you absolutely need, costs आपकी high होती हैं, ठीक है. Again, a very simplistic example. This should be obvious to everybody over here, ठीक है. I'm not saying कि ये चीज़ जो है ये आपको cost क्या query plan देख के पता चलेगी. This should be obvious to everybody over here. But as you are trying to play around with your queries and as you're trying to optimize them to run better, it's this relative comparisons of costs that you run. एक क्वेरी आपने जो है वो लिख के देखी, उससे भी आपको डेटा रिट्रीव हो रहा है जो आपको चाहिए, और दूसरी क्वेरी आपने लिख के देखी, उससे भी डेटा आपको रिट्रीव हो रहा है जो आपको चाहिए. एंड यू कंपेयर द कॉस्ट एंड then you choose the query that is of a lower cost, and that's what you use in your application. You can also run experiments on trying out different structures of queries in order to try and reduce costs. और बार बार जो है वो एक्सप्लेन रन करके आप उसमें देख लें कि कॉस्ट कहाँ पे कम हो रही है, एंड दैट्स व्हाट यू यूज इन योर एप्लीकेशन. ठीक है. Does नहीं, अभी तो आपने जो क्वेरी जो चलाई है, अभी तो क्वेरी फ़र्क है ना. क्वेरी प्लानर बेसिकली जब आपने ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, इस क्वेरी के अंदर सबसे ऑप्टिमम पाथ क्या है वो आपको बताएगा. वो ये नहीं कहेगा कि क्वेरी जो है वो ये इसमें, क्योंकि क्वेरी प्लानर को तो नहीं पता कि आपको 10 रिकॉर्ड चाहिए या आपको बाकी 1 लाख रिकॉर्ड चाहिए थे. इसके अंदर रह के जो बेस्ट पॉसिबल पाथ बनता है, दैट्स व्हाट द क्वेरी प्लानर इज गोइंग टू डू. सो इसको एक आप ये देखें फ़र्क, दिस इज अ सीक्वेंशियल स्कैन, दिस इज एन इंडेक्स स्कैन. अ मेजर डिफरेंस. उसकी वजह क्या है, यहाँ पे एक वेयर क्लॉज आ गई, ठीक है. नाउ इस जस्ट लेट मी मेक दिस पॉइंट. इस वेयर क्लॉज को थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं, ठीक है. लेस देन की जगह मैं कह देता हूँ ग्रेटर देन. डू यू थिंक इट शुड स्टिल डू एन इंडेक्स स्कैन? व्हाई नॉट? इंडेक्स तो लगा हुआ है, वेयर क्लॉज भी है, राइट, बट द इंडेक्स इज देयर. It shouldn't. Now the query planner chooses not to use the index and it does a sequential scan. Right? Is there any way to check how many possible paths where ये जो query analyzer है या explain जो है different paths different नहीं, different paths नहीं, ये वो वाला path देता है जो कि query plan वो क्वेरी प्लानर नहीं बताएगा आपको. कैसे देख सकते हैं? वो एक्सपेरिमेंट करके जो है वो आप क्वेरीज को शायद थोड़ी बहुत चेंज करके, थोड़े से अपने जो है वो डेटाबेस के डायनामिक्स चेंज करके दे सकते हैं. दैट्स DBA टेरिटरी, राइट. दैट्स नॉट डेवलपर टेरिटरी. वो तो डेव की टेरिटरी ये है कि अंडरस्टैंड इफ योर क्वेरी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल,
एंड अंडरस्टैंड कि कौन सी ट्यूनिंग करके आपकी क्वेरी कितनी बेहतर परफॉर्म कर सकती है. सर माय क्वेश्चन इज कि क्यूरी एनालाइजर जो है वो तो ऑप्टिमल पाथ सिलेक्ट करता है ना, ठीक है. अब वो ऑप्टिमल पाथ सिलेक्ट करने के लिए पॉसिबली उसने मे बी कि वो 3 या 5 उसने प्लान्स में से ये चूज़ किया हो, तो वो जो प्लान्स जो उसने रिजेक्ट कर दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, क्या वो प्लान्स हम किसी तरह से देख सकते हैं? I understand your question and the answer is no. वो आपके पास विजिबल नहीं होते. वो यहाँ पे जो है, सॉरी, वो एग्जीक्यूट करने का आपके पास कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि क्वेरी प्लानर जो है ये ऑटोमेटिकली उठाता है. यू कांट चेंज दैट. सो जो चीज़ उसने रिजेक्ट कर दी है वो आपको शो नहीं करता, वो आपको सिर्फ शो वो करता है जो कि उसने चूज़ की है, जो सेलेक्ट की है. ठीक है. हाँ, व्हाट यू कैन डू इज़ कि क्वेरी प्लानर के जो कॉस्ट एलोकेशन है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. I'll come to that in a bit जब हम डेटाबेस पैरामीटर्स के ऊपर जो है हम बात करेंगे. ठीक है. क्वेरी प्लानर जो है वो कॉस्ट कैसे असाइन कर रहा है वो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. Right? मैंने पढ़ा है, I'm not sure if it is correct. Postgres जिस तरीके से स्टोर करता है, it uses a mechanism of paging, right? And उसको हम यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारी क्वेरी, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह की सिनेरियो कि हम कैसे उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करेंगे कि एक स्पेसिफिक क्वेरी जो है ये हमारी एनहांस हो जाए. पेजिंग को उसमें भी जो है वो देयर इज वन टॉपिक इन परफॉर्मेंस फीचर्स जिसके अंदर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को टच करूँगा कि पेजिंग को जो है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. I'll come to that in a bit. मैंने कहीं पढ़ा था, मे बी आई एम रॉन्ग, कि ये जो क्यूरी प्लान होता है ये आप सेव कर सकते हैं और बाद में आप क्यूरीज की बजाय एक प्लान ही डायरेक्ट उनको एज एन इनपुट देते हैं, सो दैट ऑल द सिंटैक्स चेकिंग और वो चीज़ें स्किप होकर डायरेक्ट क्यूरी प्लान ही एग्जीक्यूट हो जाए. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. हो सकता है होता हो ऐसा कुछ. आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. Right? So we're good over here for now. Okay. I think that everybody should realize this is the first introduction to advanced tools, so take your time studying it. That's the main takeaway. हाँ, I think you know the point is कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि that's low hanging fruit that you can immediately grasp and actually scale your database. Though low hanging fruit should not be credit card swipe की और machine add कर दी. That should not be the way to do it. तो ये यानी I don't even see a point in trying to see कि यहाँ पे जो है वो क्या. So essentially जब आपका explain plan is in a more sophisticated query, आपको basically जो है ये जो arrows होते हैं, these are the single nodes जो कि आपको एक step जो है वो plan की execution का बता रहे होते हैं. Just like any programming language, nesting हो रही होती है. The innermost nest is executed first and the result is passed on to the parent. इसी तरह यहाँ पे जो है ये एक बिटमैप इंडेक्स स्कैन है, ये 2 बिटमैप इंडेक्स स्कैन्स हैं जो कि पास ऑन हो रहे हैं. गॉड नोस किस चीज़ को पास ऑन हो रहे हैं ये बिटमैप ऑपरेशन को, और दैट इज़ देन बीइंग पास्ड ऑन टू अनदर बिटमैप हीप स्कैन ओवर हेयर. तो एसेंशली और हर स्टेप की जो है वो एक कॉस्ट आती है. ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड क्वेरी इज़ at every step take a look at the cost and see and understand कि अच्छा ये वाला step जो है ये cost आपका ज़्यादा कर रहा है, तो maybe there's a different way of doing it to lower that cost and optimize your query. So essentially that was the point of explain. ये tangent बहुत बड़ा हो गया था इसे explain के ऊपर जा रहे थे, explanation लंबी हो गई explain की. Okay, another relatively simple thing, locks, statement locks. Statement locks क्या होते हैं? Anybody who's used transactions in Postgres? So what is a transaction? It basically एक concept इस तरीके से कि हमें consistency ensure करने में help out करता है. इसका feature है कि for example there are multiple queries running and we are updating a specific set of properties. तो ये उन specific set के ऊपर lock out कर देगा. It's being in a transaction and when it would be committed only after that ये जो है ना expose होगा. ठीक है. Okay. Anybody else? Transaction? मैं पानी की एक बोतल साथ लेता. Anybody else? Transactions? Anything? नहीं. Okay. So transaction, yes, that, and on top of it, transaction basically
is a block of statements or a group of statements that act as a single atomic unit of processing. ठीक है? So begin और commit के दरमियान जितनी भी जो है वो statements होंगी, they act as a single statement. वो बारी बारी execute होती हैं until the time the last one is executed, none of them is committed. या वो सारी जो है वो commit होती हैं या वो सारी roll back होती हैं. That's what a transaction control is over here. Now, it's really good. ट्रांजैक्शन कंट्रोल जो है वो होना चाहिए और आपको जो है वो बाज़ औक़ात बहुत सारी जो है वो ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे यू नीड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट एक्ट एज एन एटॉमिक स्टेटमेंट, बट ऑल्सो वॉच आउट फॉर स्टफ लाइक दिस लॉक्स. व्हेन यू डू एन अपडेट वेयर द आईडी इज़ 1, इस रो को अब इस सेशन ने लॉक कर दिया है. Nobody else can update this row because this is part of a transaction. और जिस स्टेट के ऊपर इस ट्रांजैक्शन ने ये उठाया था रो को, उस स्टेट को इस तरीके से चेंज करके इसने कमिट करना है और जब तक वो कमिट नहीं करेगा तब तक ये रो लॉक्ड रहेगी. ठीक है? Then when this part is executed, where ID is 2, now this row gets locked and now this row gets locked. Now the more the number of statements you have in a transaction, जो पहली वाली statement थी, that has the longest lock period. And if there's a different session that's trying to do something else on that row, यह बैठ के इंतज़ार कर रहा है. आपको देखने में नज़र आ रहा है कि यार मेरा डेटाबेस चल ही नहीं रहा. So you have to be careful about how you design your transactions such that they don't hold a lock for too long. Right? So that's another thing to watch out for. So let's say अगर इसी example लें तो इसका solution क्या होगा? Generic optimal solution. So ये तो बड़ा simplistic सा केस है. इसके अंदर तो मैं यानी है कि भाई आप जो है वो let it wait, right? लेकिन if you absolutely have to update all 3 rows at the same time, तो फिर तो ठीक है. लेकिन if your business logic is such that you absolutely have to update these 2 rows at the same time, लेकिन ये बस एक केयरलेसनेस के अंदर वैसे एक और जो है ट्रांजैक्शन बीच में डाल दी, ट्रांजैक्शन के बीच में डाल दिया, ऐसी प्रोग्रामिंग करते हुए जो है वो केयरलेसनेस में जो है ये चीज़ हो गई या वैसी जो है सोचा नहीं इसके बारे में. Don't do this. Think about it. Okay? Don't just add statements to a transaction. Think about it. Put only those statements that are absolutely required. Deadlock भी possible है. Deadlock is a different scenario. ठीक है? Deadlock मैंने एक्चुअली एक स्लाइड उसके अंदर डाली थी और फिर मैंने निकाल दिया इस प्रेजेंटेशन के अंदर डेडलॉक की. मैं कहा डेडलॉक जो है वो इतना रेलेवेंट नहीं है. सो डेडलॉक के केस में क्या होता है? नाउ इमेजिन अ सिनेरियो वेयर दिस इज ignore the third line. अब imagine करने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने slide डाली नहीं है. Right? So imagine this third statement does not exist. Imagine कि इस update से पहले there is another update that is doing an update foo set whatever where ID is 2, यानी this thing. ठीक है? तो इधर वो statement आ रही है. Now these 2 sessions start in parallel. When it does an ID 1 over here, it acquires an exclusive lock on this row. और जब ये ID 2 का जो है वो update करता है तो now this has acquired an exclusive lock on row number 2, ID 2. अब ये wait कर रहा है कि exclusive lock जो है छोड़ेगा तो तब मैं 2 को update करूँ. और ये वेट कर रहा है कि ये 1 का छोड़ेगा एक्सक्लूसिव लॉक तो मैं 1 को अपडेट करूं. एंड नाउ यू हैव अ डेडलॉक. You basically need to apply all your semaphore की जो considerations होती हैं ना, सारी यहाँ पे keep it as short as possible. Right. So that's how a deadlock occurs. तो डेडलॉक को वैसे जो है वो there's a timeout parameter in Postgres जिसमें जो है वो आई थिंक बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 सेकंड के ऊपर सेट होता है कि अगर कोई रोज जो है डेडलॉक रहे 1 सेकंड के ऊपर वो दोनों को रोल बैक कर देता है, दोनों ट्रांजैक्शंस को रोल बैक कर देता है. स्टेटिस्टिक्स के अंदर आपके पास टेबल्स हैं जो कि ये स्टेटिस्टिक्स गैदर कर रहे होते हैं कि कहाँ पे डेडलॉक्स कितने कितने आए हैं, कितनी कितनी देर के लिए हुए हैं डेडलॉक्स.
Sorry? So yeah, this is just about being smart about how you program and how you write code. A few performance features. Again, so by the way, पीछे जो मैंने SQL query tuning के बारे में बात की थी, this is not a comprehensive list. This is just to give you a glimpse into what is possible and a glimpse into stuff that is not extremely complicated. You don't have to be a Postgres expert to be able to do it. You can do it while being a JS expert or a Node expert or whatever you guys are. So performance, indexes. Now indexes जो है वो I guess शायद सारों को पता हो, शायद सारों को ना किसी को ना भी पता हो indexes क्या चीज़ होती है. But actually anybody over here who does not know what an index is? Okay, great, good. So index essentially acts like a table of content for your table. ठीक है, आप बुक एक खोलते हैं, उसके अंदर पहले जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स आते हैं. अगर आपने किसी एक जगह के ऊपर जंप करना है, यू कैन क्विकली जंप टू दैट पेज, बजाय इसके कि आप पूरी बुक को जो है वो बैठ के पढ़ें और फिर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जाएं. सो एन इंडेक्स acts like a table of content for your table. But in Postgres, there are different types of indexes that you can use depending on what your usage is. जो default index होता है वो B-tree index होता है. That's very simple. If you just do a create index in Postgres on a particular column, it's the B-tree index that is created. Right? Another is hash index. You can specify an index to be hash, or hash is specially designed to have the equality checks perform better. तो अगर आपने जो है वो greater than, less than, equal to, in वाले जो हैं वो ऑपरेटर्स आपने यूज़ करने हैं, तो हैश जो है वो हैश इंडेक्सेस परफॉर्म रियली वेल. द डाउन साइड ऑफ अ हैश इंडेक्स इज कि अगर आप रेंज स्पेसिफाई कर दें तो हैश इंडेक्स फेल हो जाता है. इट हैज़ टू बी द इक्वल ऑपरेटर इन सम वे. रेंज अगर स्पेसिफाई करेंगे कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस या बिटवीन दिस एंड दिस, उसके अंदर जो है वो हैश इंडेक्स फेल हो जाएगा. Composite index is a multi-column. Normally एक column के ऊपर index लगता है. You can have a composite index on 2 or more columns, और उनको combined जो है वो उसका index बनाता है. So essentially, if you usually have a query that is grouped by or where clause के अंदर जो है वो multiple columns आ रहे होते हैं, तो उन columns को अगर आप एक index में कर लें तो the performance becomes better. A partial index is इंडेक्स की अपनी भी एक कॉस्ट होती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टोरिंग दैट टेबल ऑफ कंटेंट्स भी जो है वो कुछ तो सफ़े ले रहे होते हैं ना एक बुक के अंदर, कुछ तो उन्होंने भी जगह लेनी होती है. और अगर बुक बहुत बड़ी है तो उसका टेबल ऑफ कंटेंट भी जो है वो बड़ा होता जाएगा. और अगर बुक जो है वो उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उसके साथ साथ आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी जो है वो अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू बी एफिशिएंट अबाउट इंडेक्सेस एज वेल. सो अ पार्शियल इंडेक्स सेज कि अच्छा भाई ये जो first half है ना बुक का, I don't care about that. I'm only interested in the second half. So you only maintain the second half of the index. तो इसके अंदर एक conditional clause आ जाता है partial index के अंदर. तो you only maintain part of that table in the index. Covering index means कि आपने एक particular column के ऊपर index लगा दिया, but you can include a different column if you have queries that usually retrieve that other column as well. So for example, अगर आपके पास एक query है select y from a particular table where x is greater than a number. तो basically index जो है वो x का use हो रहा है लेकिन data आपको y चाहिए. So if you use a covering index that is that's indexing the table on x but also including y, तो आपका y का भी जो data retrieval है वो sequential scan की बजाय index scan के ऊपर आ जाएगा. There was a question over here. यहाँ पे somebody was raising their hand. नहीं, okay. हैशिंग के अंदर जिस तरह नॉर्मल हैशिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस होती हैं, तो पोस्टग्रेस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हैश इंडेक्सिंग जब हम कर रहे हैं, इज दिस अ सिनेरियो ओवर हियर? Describe what you mean by conflict over here. हमारे पास एक सिंगल इंडेक्स है जो कि एक सेकंड इंडेक्स की वैल्यू जब हैश कैलकुलेट उसका हुआ उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट पे सेम सम रीजन. ठीक है. So in that scenario what will happen? So what you're saying is कि an index is being recalculated and value hashed value is same. Sir, he is actually saying data structure में hashing में
डेटा स्ट्रक्चर में मेरा अच्छा ग्रेड नहीं आया था हम लोग इंडेक्सिंग तो करते ही मतलब यूनिक आइडेंटिफायर्स पे था, तो वहाँ पे तो यूनिक आइडेंटिफायर्स पे तो हैशिंग सेम आएगी वहाँ पे। लेट्स से अगर किसी CNIC पे करेंगे तो CNIC के साथ डिफरेंट है। अगेन मुझे हैशिंग के कॉन्फ्लिक्ट का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, सो आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट, ठीक है, आई एम सॉरी। नॉट नेसेसरीली यूनिक पे नहीं हो सकता, कोई ऐसी फील्ड होती है यूनिक नहीं होती, उसको भी कंडीशन डालेंगे। ओके, सो कवरिंग हो गया। अच्छा, ब्रिन इंडेक्सेस, देयर वाज अ क्वेश्चन ओवर हियर अबाउट पेजेस के जवाब आपने की थी। अच्छा, सो ब्रिन इंडेक्सेस जो है, दैट इज व्हेन यू कैन यूटिलाइज हाउ द डेटा इज स्टोर्ड। आई कैन यूज दिस बोर्ड, राइट? Okay, so let's see. So essentially, data is stored in pages or blocks in Postgres. Okay, so let's say this is block 1, block 2, and block 3. Data शुरू हुआ, let's say it's time series data. ठीक है, और आपने जो है वो एक particular time से जो है वो शुरू किया 1, 2, 3, so and so forth. यहाँ 10 तक आया, यहाँ 11 से शुरू हुआ, 20 तक आया, 21 से शुरू हुआ और 30 तक आया, ठीक है, एंड यू गॉट ऑल ऑफ दिस डेटा स्टोर्ड लाइक दिस, सिक्वेंशली स्टोर कर रहे हैं। नाउ इफ़ यू इंडेक्स ऑन दिस, नॉर्मल तो आप इंडेक्स कर सकते हैं, you'll be fine, लेकिन Brin indexes provide you a way to have more efficient storage of your index data. So what it does is it says कि अच्छा ये जो block 1 है, this has data starting from 1 till 10, and this is the only thing that it stores. And it says कि block 2 में it is from 11 till 20, और block 3 में it is from 21 till 30. So this is the only thing that it stores. It doesn't store the actual values between 1 and 10 or between 11 and 20 or between 21 and 30. So when you query a Brin index, what it does is it says कि अच्छा किस range के अंदर lie करती है मेरी query, and then उस index को जाके hit करते हैं। So that's how you can leverage some page structure as well. Okay. But indexes भी जो हैं वो जी यस यस अगर आपने जो है अगर एक ही कॉलम के ऊपर आपने वैसे ही इंडेक्सेस जो हैं बना दिए हैं कि देयर इज नो कंडीशनल थिंग्स अटैच्ड टू इट, वो तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ स्पेस। यू कैन डू इट बट यू विल जस्ट बी वेस्टिंग स्पेस। लेकिन अच्छा, so you meant different types of indexes on it. I think actually ये वाली चीज़ जो है it's worth running an explain plan on कि आप जो है वो index create करें on a populated table and run an explain plan on a couple of different queries and see कि कौन सा index वो use कर रहा है. It's worth investigating. So indexes, it's not a one size fits all. It doesn't mean कि भाई आपने जो है वो index बना लिया and वो जो बटन था ना हमने वो क्या था कि भाई make everything good. Index is not that button, right? हमने जो है वो demonstrate कर लिया था, हमने देखा था कि जब आपका data जो है वो बहुत बड़ा है जो आप retrieve कर रहे हैं तो Postgres starts to use the sequential scan instead of index scans. So there's no point in creating an index if you are usually retrieving that large amount of data because you're just wasting space. उसने वैसे ही sequential scan करना है, index बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है. If your workload is mostly write and updates, write heavy जो है workload है और read कभी कभी आपने करना होता है. Index तब आपको जो है फ़ायदा देता है जब आपने read करना होता है. Write के लिए index is actually an overhead because आप book change कर रहे हैं और साथ साथ आपने table of content भी जो है वो update करना है. ठीक है, so it's actually an overhead. If it's a write heavy load, then you might as well not have an index. Over indexing again, अगर आपने एक ही column के ऊपर जो है वो 3-4 indexes लगा दी हैं और आपका actual उसका use नहीं है, utility नहीं है, it will cause bloat in the table because indexes do need their own space.
टेबल इतना छोटा है कि सीक्वेंशियल स्कैन ही कर लें कोई मसला नहीं है, 10 टोटल रोज हैं उसके ऊपर भी आपने इंडेक्स लगा दिया, कोई फ़ायदा नहीं है करने का. So you know these are some cases where indexes are not exactly required. मेरे माइंड में आ रहा है कि आपके पास जैसे एक क्लस्टर है और आपने वो मास्टर स्लेव वाला आर्किटेक्चर फॉलो किया हुआ है. इज इट पॉसिबल कि हम जिस डेटाबेस में राइट कर रहे हैं उसके टेबल में हम कोई इंडेक्सेस ना करें और जिससे रीड कर रहे हैं सेम टेबल में उसके इंडेक्सेस ना. Yes, that you can do. Right? Now, that you can do, especially when you're using logical replication. Streaming replication जो है, so do you know the difference between? तो streaming replication जो है वो physical replication होती है, उसको जो है वो exact replica चाहिए होता है दोनों के ऊपर, लेकिन logical replication में difference हो सकता है. So you could make your the primary node, you can tune it for writes, and your secondary node, your standby node, you can tune it for reads. Okay, so and you know there are lots of features in Postgres जो कि behind the scenes they just work, and you know you get to know about them because कोई announcement आती है नई release की, उसके अंदर कहते हैं जी हमने जो है वो ये improvement कर दी, ये improvement कर दी, and then you ask yourself the question कि अच्छा improvement हो गई है, अब मैंने इस्तेमाल कैसे करना है इससे, and you find out कि you don't really get to define how to use it, it just works, right? So these are some examples. Parallel queries, parallelism usually just works. अगर sequential scan parallel execute कर सकता है Postgres, it will do it without you specifying it, right? Heap only tables hot are when you do a lot of updates on a particular table, तो dead rows जो है वो create हो जाती हैं. Heap only tuples essentially remove that bloat, remove that dead tuples, load उसका जो है वो automatically उसको remove करके table के bloat को reduce करते हैं. Incremental sort is when you're retrieving data. Pipeline हमने देखा था query planner के अंदर, it's a pipeline. It starts at a certain cost and then it ends at a certain cost, and you know उसके अंदर जो है वो data retrieve हो रहा होता है. और अगर retrieve करते हुए incrementally Postgres sort कर सके data को, it will do an incremental sort. Right? It just happens automatically. And auto vacuum is when it just runs on the entire database, और जो भी dead tuples होती हैं और जो disk को space को free up करने की ज़रूरत होती है जहाँ पे, उसको space को free करके उसको rearrange करता रहता है to make sure that your database stays efficient, and there's no dead stuff lying around. Right? So these are features that just work. Okay. लास्ट स्लाइड से एक क्वेश्चन है, आपने बहुत सारी अपडेट्स हो तो डेट टपल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ये कैसे? Any chance you know the concept of MVCC, multi-version concurrency control? Okay, so Postgres, what it does is, because it allows for concurrent connections, multiple connections जब बन रहे होते हैं database को, each connection has a snapshot of the data, and the database makes sure that the data remains consistent. Okay? In order to achieve that, one of the things that it does is that when you update a row, it doesn't update the data in place, it basically removes or marks that row as deleted and then adds a new row with the updated values. So actual in-place updates nahi hoti. Now, when that happens, वो जो mark हो गई है row as deleted is essentially a dead tuple. लेकिन हो सकता है कि किसी concurrent connection के लिए जो है वो अभी भी useful हो क्योंकि उसके पास वो snapshot पड़ा हुआ है उसका. So there is some time between when a row is marked as dead and when it can actually be completely removed from the database. Okay? That's how dead tuples are created, and that's what auto vacuum does. Right? अभी आपने बताया कि वो न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करता है, उसकी क्या रीजन है? पिछला क्यों नहीं अपडेट करता? So अगर पिछले को जो है वो in place update कर देगा, तो जो concurrent connections है जिसने already जो है वो data कह लें कि एक उसका जो snapshot जो है वो रखा हुआ है अपने पास या read किया हुआ है अपने पास, data inconsistent हो जाएगा उसके लिए. That data will be marked as changed even though for that particular connection it has not changed.
or that particular session it has not changed. तो फिर तो inconsistent वैसे भी होगा कि अगर new data वो insert कर रहा है उसके पास snapshot बनाना पड़ेगा. वो डेटा इंसर्ट कर रहा है, दैट वुड बी अनदर रो एनीवेज, ठीक है. नहीं, so we are talking about updates only. This is updates only. ये deletes में भी नहीं होता, ये inserts में भी नहीं होता. This is updates only. Update in place नहीं होता data. पिछले row को it is marked as removed, as dead, deleted, and a new row gets inserted. That other connection, as soon as it does another retrieval of the of that same table, it will get the new data, जो updated data होगा. और जब connection जिसको मतलब deadlock खत्म हो जाता है वैसे ही खत्म हो जाता है मतलब तो वो ये PostgreSQL को automatically remove कर देता है उसको. Dead tuples को yes. Auto vacuum चलने की जो है वो एक frequency होती है, and basically what it does is कि जितने dead tuples mark हुए होते हैं tables के अंदर, पूरे database के अंदर, उनको remove कर देता है. Okay, architectural improvements क्या की जा सकती हैं? Load balancing. For the people who were here in my last talk, this was one of the things that I discussed. Essentially ये है कि एक node के अंदर जो है वो अगर आपका read भी हो रहा है और write भी हो रहा है, तो सारा load जो है वो उसी एक node ने लिया हुआ है. If you split it up in 2 or 3 nodes as shown over here, you could design your cluster to have writes executed on one node and reads from 2 other nodes. उसमें यह है कि write और read के जो हैं वो loads distribute हो गए, and now your cluster can perform better. An example over here, this is actually something that Simab and Salman were doing yesterday, helping me out with this gathering of this particular data. This is running PG Bench, which is the benchmark utility, on a single node cluster, and this is on a 3 node cluster that is load balanced. So essentially बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो details हैं on how the actual benchmark was run. लेकिन the thing to note over here is यहाँ पे it is 371 TPS transactions per second with a single node, the same machine specs, the same benchmark, the same load. When it runs on a 3 node cluster, which is load balanced, it gives you a TPS of 485 transactions per second. Performance आपकी significantly जो है वो improve हो जाती है. Partitioning is another way of trying to improve performance. अगर आपका table जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, you could partition by a certain criteria. So instead of data being retrieved from the whole table, एक पूरा table जो है वो scan करने की ज़रूरत पड़े, वो सिर्फ partition को जो है वो scan करके data retrieve कर ले, which will be a significantly smaller set. This partition could be done based on time, जिस तरह से वो मैंने example दिया था. It could be based on geography, depending on how your data is structured, you could partition it. And what happens over here is if in an unpartitioned database, when you run a query like this, when you have all of these months in a single table, when you need to retrieve data for August only, ये वाला table जो है वो basically पूरे इस table को जो है वो देखना पड़ेगा query को before it can retrieve data. But in this case, if you have partitioned by let's say quarter, 3 महीने आपने जो है वो डाल दिया partitions के अंदर, what it will do is it will go straight to the 3rd quarter जिसमें August करता है और यहाँ से data retrieve करेगा, which is a much smaller subset, and the other 3 partitions are not going to get touched. Updates और deletes भी बिल्कुल exactly इसी तरीके से जो है ज़्यादा efficient हो जाती हैं when you have partitioned data. So parameters. Now, I cannot emphasize this enough. Most defaults out of the box are good enough. So the general advice is कि छोड़ दें उन्हें, जिस तरह से है उसी तरह से छोड़ दें. In fact, ये जो 4 broad areas जो हैं ये मैं define कर रहा था, and I was working with an advisor of mine to figure out कि इसकी जो है वो service offering जो है वो मैंने कैसे बनानी है. जब मैं database parameter tuning के ऊपर आया तो वो आगे से कहता है कि नहीं parameters को छोड़ दो, parameters को ना छेड़ना. There is nothing wrong with them. But I still think कि a few parameters you should know जो exist करते हैं Postgres के अंदर, जो कि फ़ायदेमंद हो सकते हैं, especially if your hardware is significantly different configuration than a typical hardware that's available.
your database is structured very differently or your use case is a very unique one. तो उसमें तो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग से जो है वो आपकी हेल्प हो जाएगी. So a few examples over here. Shared buffers. Shared buffer जो है वो basically it is a cache for frequently accessed data. ज़्यादा डेटा एक्सेस हो रहा है, शेयर्ड बफर के अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है, बजाय डिस्क से फेच करने के डेटा. नाउ इट कैन fetch that data from memory and it is significantly faster. The default is 128 MB, which is I think by today's standards, जिस तरह की आजकल हमारे पास जो हार्डवेयर की कन्फिगरेशंस आ रही हैं और जो जितनी मेमोरी होती है उसके लिहाज से शायद इट्स अ स्मॉल नंबर. Typically what you want to do is at least जो है वो 25% of your available memory होनी चाहिए shared buffers की. तो you can tune this parameter. Wall buffers is write ahead log. Write ahead log basically जो है वो is as Postgres writes to the disk, there's a write ahead log which then writes the data to disk. और उसका भी एक बफर क्रिएट होता है. तो शेयर्ड बफर जो है वो रीडिंग का था, वॉल बफर्स जो है वो बेसिकली राइटिंग का है. एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली द सेम एवरीथिंग. जितना वो बफर ज़्यादा होगा उतना पोस्टग्रेस जो है वो जल्दी फ्री अप होता जाएगा और उतना जो है वो दूसरे कामों के ऊपर जो है वो फोकस कर सकेगा. द डिफ़ॉल्ट टिपिकली फॉर वॉल बफर्स इज 3% ऑफ शेयर्ड बफर्स. But you can tune that and you can actually increase it to up to 16 MB. और राइट हैवी वर्कलोड्स के लिए जो है वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस ये इम्प्रूव कर देता है. वर्क मैम, व्हेन यू आर रनिंग अ पर्टिकुलर क्वेरी, उसके अंदर जो आप सॉर्ट्स कर रहे हैं या कंपैरिजन्स कर रहे हैं उसके लिए जो अवेलेबल है मेमोरी, दैट इज़ वर्क मैम. द डिफ़ॉल्ट इज़ 4 MB and you can change this default of course. When there is a lot of back and forth between disks, एक चीज़ PG स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने जो है वो आपको बताई थी वो बल्क रीड एंड बल्क राइट्स की, कि अगर जो है वो आपकी कोई क्वेरी जो है वो बहुत ज़्यादा रीड्स एंड राइट्स कर रही है, इट्स अ साइन कि शायद आपको कुछ थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है ताकि मेमोरी से जो है ये चीज़ उठाई जाए बजाय इसके कि बार बार डिस्क के पास जाया जाए. सो दिस इज़ वन वे टू डू इट, वर्क मैम को जो है वो इंक्रीज़ करके. Increasing it too much can be dangerous because every operation of every query is assigned this much memory. ठीक है. सो अगर आपकी एक क्वेरी के अंदर लेट्स से 10 ऑपरेशंस हो रहे हैं और आपके जो हैं वो 50 क्वेरीज चल रही हैं, those are 500 operations and now all of a sudden you are doing 500 multiplied by 4 MB. That's a large amount of memory that gets consumed. So you have to be careful about it. बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं सोची जा सकती. Is there a question? Or just stretching? That's fine. क्वेश्चन था कि बेंचमार्क कहीं से वैसे थे करंटली हमारे क्लस्टर के अंदर कितना इनका ओवरऑल यूजेस हो रहा है, इसका बेंचमार्क स्टार्ट्स होते हैं इसके. इसकी कन्फिगरेशन का जो है वो एक फ़ाइल होती है postgres.conf के नाम से, डेटा डायरेक्टरी के अंदर होती है. उसके अंदर इनकी वैल्यू सेट हुई होती हैं. इसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको जो है स्टैटिस्टिक्स के टेबल्स को जो है देखना पड़ेगा. ठीक है. सो देयर आर इंडिकेटर्स. जिस तरह से वो एक इंडिकेटर है, अगर आपका आईओ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेमोरी जो है वो अवेलेबल कम है या डेटा बहुत ज़्यादा रिट्रीव हो रहा है, उसे बार बार डिस्क की तरफ जाना पड़ रहा है. ये इंडिकेटर्स होते हैं इस तरह के. मेंटेनेंस वर्क मैम, सो दीज आर जो बिहाइंड द सीन्स प्रोसेसेस चल रहे होते हैं. ऑटो वैक्यूम की हमने बात की थी. जो बिहाइंड द सीन प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनको कितनी मेमोरी एलोकेटेड है, दैट इज डिफाइंड बाय मेंटेनेंस वर्क मैम. effective cache size. Now, effective cache size and random page costs are examples of two parameters that are used by the query planner to assign cost to particular operations. ठीक है. This is not an allocation. These are not allocations. ये इसमें कोई value assign नहीं हो रही. These are values that are used by the query planner to assign a particular cost. So, for example, effective cache size. This by default is 4 GB, and what it says is that the higher you go, the more the query planner is encouraged to use index scans. Essentially वो आपको ये कह रहा है कि आपके पास कैश साइज़ जो है वो काफ़ी है, कैश आपके पास काफ़ी है, तो आप इंडेक्सेस को जो है वो बेशक लोड कर लो, जितना मर्जी जो है वो आपने लोड करना है आप लोड करो. एनकरेज करेगा इंडेक्सेस को लोड करने का. तो सिक्वेंशियल स्कैन्स को जो है वो डिस्करेज करेगा
इंडेक्स स्कैन्स को इनकरेज करेगा विद अ हाई इफेक्टिव कैश साइज। रैंडम पेज कॉस्ट एसेंशली डेमोन्स्ट्रेट्स कि कोई रैंडमली पेज अगर एक्सेस करना है आपने डिस्क में तो उसकी कॉस्ट क्या है। सो दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव अ स्पिनिंग डिस्क वर्सेस अ सॉलिड स्टेट डिस्क। स्पिनिंग डिस्क के अंदर जो है वो रैंडम पेज एक्सेस करने की कॉस्ट जो है वो हाई होती है, सो दिस वैल्यू शुड बी हाई। ठीक है, अगर आपके पास जो सॉलिड स्टेट डिस्क है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपके पास, तो उसके अंदर रैंडम पेज को एक्सेस करने की कॉस्ट लो होती है, तो यू कैन कीप इट लो। और लो रखने से ये होगा कि वो इंडेक्स स्कैन्स को प्रेफर करेगा क्वेरी प्लानर, हाई रखने से जो है वो सिक्वेंशियल स्कैन्स को प्रेफर करेगा, क्योंकि रैंडम पेज को एक्सेस करना फिर उसको पता है कि उसके लिए मुश्किल है। So these are a few parameters that can be easily tuned. Conclusion, lots of variables involved, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, there's no one size fits all, there's no one button that is going to fix all of your problems. Just because you have powerful hardware does not necessarily mean that your database is going to perform well. Everything comes together and combined is what makes the effect. So you have to keep all of these variables in mind. और ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो है उसके बाद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, now you can start thinking about scaling my credit card. Questions? So that's my used to be Twitter, now X, and that QR code is my LinkedIn. So you know, if you want to follow me or get connected, do that. Use Postgres, keep calm. Good idea. Good idea. I will make that slide. Keep calm and call Stromatics. So yeah. इसके ऊपर जो है वो पिछली मैंने ये जो रीजनल स्लाइड थी, ये जो फाइनल एक स्लाइड होती है उसके ऊपर आमतौर पे एक ठप्पा लगा हुआ होता है वेयर हायरिंग का। वो लास्ट टाइम जो है वो मैंने वही वाला जो है वो एक चीज डाल दिया था, मैंने कहा यानी नहीं तो नहीं मैंने हायर करना किसी को। So yeah. Okay. Well. So I guess वो क्वेश्चन आंसर बीच में होते रहते हैं। हाँ, तो होप दिस वाज हेल्पफुल इन सम वेज। एक्सप्लेन ने काफ़ी एक्सप्लेनेशन मांगी है ना। I think we can wrap up now. We're all good? Thank you. Thank you. Doesn't count as credit.